Welcome, dear students. Today is your first video lecture. Subject name is Tropical and Subtropical Fruit Production. Tropical and Subtropical Fruit Production. Now the code is HORT 503. HORT 503. Lecture number first. Unit first. And the topic is mango introduction, origin and distribution. Mango introduction, origin and distribution. Class MSc Horticulture 3rd semester. Course instructor Ankur Sharma. Now the designation is Assistant Professor, School of Agriculture. Now we will start. Firstly, what is the outline of this chapter? Outline of this topic, in which we will briefly discuss about introduction, origin, varietal origin, distribution, classification, history, and the last is references. आम का एक डायग्राम है, क्योंकि हमने मैंगो से शुरू किया है तो सर्वप्रथम आपको ये पता होना चाहिए। बेसिकली मैंगो सबने देखा है, लेकिन फिर भी हमने अपनी स्लाइड में एक मैंगो के डायग्राम को रखा है। नाउ द फर्स्ट इज इंट्रोडक्शन। मैंगो इज the most important fruit crop in India. Mango is the most important fruit crop in India. Since ages, mango tree has been described as कल्पवृक्ष। इसको कल्पवृक्ष के रूप में भी परिभाषित किया गया है। बिसिंग ग्रांड ट्री। हमें कुछ यदि मांगना हो, यदि कुछ प्रे करना हो भगवान से, तो हमने एक विश ग्राइंडिंग ट्री के रूप में भी इसे इस्तेमाल किया है। तो इसे हिंदी साहित्य में कल्पवृक्ष कहा जाता है। देवनागरी लिपि का एक शब्द है कल्पवृक्ष। इट इज नॉन एज द किंग ऑफ फ्रूट्स। इसे फलों का राजा भी कहते हैं। एंड इज द चॉइसेस्ट फ्रूट इन इंडिया एंड अब्रॉड। काफ़ी चॉइस भरा, काफ़ी अच्छा रस भरा फ्रूट इंडिया के साथ साथ विदेशी देशों में भी इसे पसंद किया जाता है। Its long period of domestication in India is well evidenced from its mention in ancient scriptures. Its long period of domestication in India is well evidenced from its mention in ancient scriptures. Mango is a part and parcel of cultural heritage of India. हमारी सांस्कृतिक धरोहर को भी ये परिभाषित करता है। टुडे द मैंगो ट्री एंड इट्स फ्रूट। आज आम का वृक्ष और इसके फल रिमेन इम्पॉर्टेंट, आवश्यक बने हुए हैं इंडियन रिलीजियस एंड कल्चरल सिंबल्स में। हमारे हिंदू धर्म के भारतीय जो सांस्कृतिक सांकेतांक हैं, धार्मिक विरासत है, उसमें भी इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस है। द मैंगो इज इंटीमेटली एसोसिएटेड विद द हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड सिविलाइजेशन इन इंडिया। आयुर्वेदिक एंड सम एंशिएंट टेक्स्ट रिकॉग्नाइज राइप मैंगो एज एफ्रोडिसियाक and enhancer of vitality and stamina. Enhancer of vitality and stamina. Since the ancient time, it has a great cultural, socio-economic and religious significance in India. Since the ancient time, it has a great cultural, socio-economic and religious significance in India. Now the next slide is
It is known in India from ancient time. बहुत पुरातात्विक, बहुत पिछले कालों से भारत में इसे जाना जाता है. As is evident from its reference in the early Sanskrit text as Amra, च्यूट and रसाल. संस्कृत साहित्य में इन शब्दों के द्वारा भी इसे परिभाषित किया गया है. आम्र, च्यूट and रसाल. The mango tree play sacred role in India. The mango tree plays sacred role in India. It is a symbol of love. It is a symbol of love, and people believe that the mango tree can fulfill our wishes. The mango tree can fulfill our wishes. In the Hindu culture, hanging fresh mango leaves outside the front door during पोंगल, हिंदू न्यू ईयर, पोंगल को हिंदी न्यू ईयर भी बोलते हैं, पोंगल, एंड दीपावली इज कंसिडर्ड अ ब्लेसिंग टू द हाउस. द मैंगो लीव्स आर यूज्ड एट bedding to ensure the couple to bear plenty of children, though it is only the birth of male child that is celebrated again by hanging mango leaves outside the house. Hindus may also brush their teeth with mango twigs on holidays. Be sure to rinse well and spit if you try this at home, as it is toxic. Now the next slide is origin. Origin of mango. The mango originated in the foothills of Himalayas of the southern Asia. The mango originated in the foothills of the Himalayas of the southern Asia, eastern India, Burma and the Andaman Islands, bordering the Bay of Bengal, dating back to 4000 BC, where it still grows wild in the hills of Assam and adjacent areas. The earliest mention of mango tree is found in ancient Sanskrit scriptures dating back to 4000 BC. Mangifera indica means the great fruit bearers. Historical records and paleobotanical evidences provides ample proof about its origin in the Indo-Burma Malaya region. On the basis of presence of maximum number of allied species, growing in Malaysia, some workers are led to believe that Malaysian region is the original home of mango. But Baby Law of 1926 supported that mango is originated in Indo-Burma region. Mukherjee 1949b concluded that occurrence of wild form of Mangifera indica and its allied species and presence of numerous cultivated and wild varieties in India were some of the major reasons in favor of mango having originated in Indo-Burma region. ये तो origin की बात हुई.
अब इसी ओरिजिन में यदि हम थोड़ा डीपली जाएं और जो बेबीलोव और डी कंडोल जी ने थोड़ा ब्रीफली इसे डिस्क्राइब किया है, तो उसकी हम यदि बात करें तो जनरली वी ऑल नो दैट द मैंगो इज़ अ मेंबर ऑफ एनाकार्डियेसी फैमिली. Mango is the member of the Anacardiaceae family, which includes poison ivy, cashew, and pistachio nut. It is also as mango, manga, mangot, mango, and mangoe in other part of the world. हम इसे इस नाम से भी जानते हैं. ये origin से हटके मैं बात कर रहा हूँ. The mango comes in over 50 varieties, ranging in color from greenish, yellowish to reddish, often tinged with purple, pink, orange yellow or red. Buddhist monks are believed to have taken the mangoes on voyages to Malaya and Eastern Asia during the 4th and 5th centuries BC. The mango is considered to be a sacred fruit in the region because it is said that the Lord Buddha himself meditated under a mango tree, as a result of which we found tranquility and response in a major orchard. Tranquility and response in a mango orchard. According to Fahin and Sangyang, the Lord Buddha was presented with a mango orchard by Amaradhika in 500 BC as a place for meditation. The peripatetic Buddhist monks were the first to spill the beans and initiated the trade of the mango fruit some 400 to 500 countries BC. A mango tree is found in the friezes on the stupa of Bharat, which dates back about 100 BC. The soldiers of Alexander the Great had gone across orchards in Indus Valley. It is speculated that the traders and monks from India introduced superior elections of mango into Southeast Asia. The mango is referred in the travelogues of ancient travelers, namely Huan Tashang 632 से 655 AD तक, IBN Hongkol 908 से 968 AD तक, and IBN Batuta 1325 से 1345 AD. The Chinese traveler Huang Tsang, during his visit in India 632-645 AD, brought the mangoes to China. According to a German-born botanist, George Everhand Rumphius, in his hat embossing Crudivoc of Herbaceum amboinans 1741, the mango was introduced into certain islands of the Indonesia archipelago within recent times. However, the mango was in cultivation in Java as early as 900 to 100 AD, when the temple at Borobudur was built and faced with the cabins of the Lord Buddha in the contemplation under a mango tree. अकॉर्डिंग टू डी कंडोल, इसी ओरिजिन में बात कर रहा हूँ मैं, इसी ओरिजिन के अंदर डी कंडोल ने क्या कहा है. According to De Candolle 1883, it is impossible to doubt that the mango is native of the south of Asia or of the Malaya archipelago. Several investigations have been carried out on more scientific lines on the origin of cultivated plants. Now, what is the point of view of Babilev in the origin of mango? The point of Babilev 1926 work on genetic variation in the staple crop plant of the world, and the location of the centers of those variations is the most outstanding. Location is the most outstanding, from which he suggested the Indo-Burma region as the center of origin of the mango. This problem
This problem has been further investigated and conclusions have been derived by an analysis of the phytographical data, phytogenetic taxonomy of all the species included in the genus of Mangifera. A brief classification described by Linnaeus 1754 in genera Plantarum. And the last is the genus Mangifera of the family Anacardiaceae and the order Sapindiales is restricted to the tropical Asia. अब इसका origin खत्म हुआ है. Now the varietal origin. ये वैराइटीज़ हैं साइड में. बन्ना कालो, कैसिंगटन प्राइस, अल्फांसो, क्रीपिंग, हाइब्रिड 17, नीलम, पद्दीरी, SB चौसा, सुवर्ण रेखा, एप्पल, अरुमेनिस. इस एप्पल को थोड़ा नोट कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी है. कंपटीशन में पूछी जाती है और ज़्यादातर स्टूडेंट इससे कंफ्यूज होता है, क्योंकि एप्पल इज़ अ वैरायटी ऑफ मैंगो. क्योंकि एप्पल अपने आप में खुद एक फ्रूट है, किंग ऑफ टेम्परेट फ्रूट. एप्पल अपने आप में वो वजूद रखता है एक फसल का, और उसके रूप में पूछा जाता है कि एप्पल इज़ अ वैरायटी ऑफ. यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज होता है और नेट के एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन आता है. इसलिए आप नोट कर लेना कि एप्पल इज़ अ वैरायटी ऑफ मैंगो. द साइंटिफिक नेम इज़ मैंजिफेरा इंडिका, ऑरिजिनेटेड फ्रॉम मलेशिया. इसके बाद में अरुमेनिस, तुंगची, काराबाओ लमाओ, विल्लार्ड, फलन, महाचनूक. ये वैराइटीज़ फर्स्ट लाइन में हुई. इनका साइंटिफिक नेम सबका मैंजिफेरा इंडिका है, पर तुंगची में इसमें सेंसलेट लगा दिया गया है, क्योंकि वहाँ के पर्टिकुलर साइंटिस्ट ने इस पर काम किया होगा, तो उसने इंडियन स्पीसीज़ के साथ उस नाम को भी ऐड कर दिया, ताकि ये चीज़ आइडेंटिफाई हो सके कि इस वैराइटीज़ का डोमेस्टिकेशन, इस वैराइटीज़ का ओरिजिन चाइनीज़ कंडीशंस में हुआ है, जिसमें बनाना कैलो और कैसिंगटन प्राइस का ओरिजिन ऑस्ट्रेलिया है, और रेस्ट ऑफ द कैसिंगटन प्राइस से सुवर्ण रेखा तक इंडियन ओरिजिन की है. एप्पल मलेशिया का है, अरुमेनिस मलेशिया का है, तुंगची मलेशिया का है, काराबाओ लमाओ फिलीपींस का है, विल्लार्ड श्रीलंका से है, फैलन थाईलैंड से है, एंड महाचनूक थाईलैंड से. इसके बाद नामडॉक में थाईलैंड का है, इरविन USA फ्लोरिडा का है, कीटवी USA फ्लोरिडा का है, कैंटवी USA फ्लोरिडा से ओरिजिन में है, लाइपेंस USA फ्लोरिडा का है, पामर भी USA फ्लोरिडा का है, टॉमी एटकिंस एक कलर्ड वैरायटी है, ये भी आपकी फ्लोरिडा से है, बैन डाइक ये भी आपकी कलर्ड वैरायटी है, ठीक है. मोनोएम्ब्रोनिक ये भी आपकी USA फ्लोरिडा से है, सापा वियतनाम से है, जोट कैट चू ये वियतनाम से है, ज्यूली वेस्ट इंडीज़ से है, बिंजाई इंडोनेशिया से है, बॉगर टू इंडोनेशिया से है, लॉम्बोक इंडोनेशिया से है, अननोन एक वैरायटी है जो मलेशिया से है, इसका भी आपका मैंजिफेरा स्पीसीज ही है, और वैनी ये मैंजिफेरा ऑडोरेटा से है, ये मलेशिया ओरिजिन की है. तो यहाँ वेराइटल ओरिजिन्स को भी बताया गया है, जिससे कहीं कन्फ्यूजन का कोई मुद्दा ना बने. Now the next slide is distribution. Gradually, the mango moved from its center of origin in Indo-Burma, Myanmar region to all the mango cultivating countries. The mango seeds traveled with humans from Asia to Middle East, East Africa and South America beginning around 300 to 400 AD.
In beginning, it moved to the Southeast Asia and the Malaya archipelago, and by the 7th century, it reached China. The Persians are said to have carried it to East Africa around the 10th century AD. Muslim missionaries took mango to the Mindanao and the Sulu of the Philippines in the beginning of the 15th century. During the end of the 15th century and the beginning of the 16th century, the mango entered into the Philippines from India through Spanish. During the end of the 15th century and beginning of the 16th century, the mango entered into the Philippines from India through Spanish. Now the next slide is the mango is spread from South and Southern Asia over the tropical and subtropical areas of the world as a result of the Portuguese and Spanish voyages from the end of the 15th century onwards. Spanish voyages from the end of the 15th centuries onward. Mangoes was carried to Africa during the 16th century and later found their way abroad through Portuguese ships to Brazil in the 1700s. Portuguese brought mango from Goa to South Africa and from South Africa to Brazil in the beginning of the 18th century onwards. From Africa, the Portuguese brought it to the West India, Also, however, it was commonly grown in the East Indies before the earliest visits of the Portuguese. The mango was taken to Santo Domingo of Barbados in the West Indies in the middle of the 18th century, circa 1990, and from Bourbon to Santo Domingo in the 1782. The reference is Srivastava 1998. इस डिस्ट्रीब्यूशन के यदि थोड़े हम डीप में जाएं, क्योंकि नेक्स्ट स्लाइड हमारी टैक्सोनॉमिक हायरार्ची की है, तो थोड़ा डीप में भी हम चीज़ों को समझा दें इसके अतिरिक्त कि इन द 16th century a special technique employing grafting was developed for purposing the mango. During the 17th century, the Portuguese planted mango in coastal areas of the both East and West Africa, but acceptance by the African was slow and spread into the interior was erratic. Mango trees were present in a few interior market towns in West Africa when European explorers arrived in the late 19th century. But most of the spreader came later. The earliest non-successful introduction of mango to the New World was to Bahia in Brazil about 700, with the plantings elsewhere along the Brazilian coast soon after. In the Brazil, the mango is produced in the state of Minas and Gerais, Ceará, Paraíba, Goiás, Pernambuco, and Maranhão. Mango growing began with the earliest settlers in North Queensland, Australia, with seeds brought casually from India, Ceylon, the East Indies, and the Philippines. In 1875, 40 varieties from India were set out in a single plantation. Over the years, selection has been made for commercial production and culture has extended to subtropical Western Australia. There is no record
There is no record to the introduction of the mango in South Africa, but a plantation was set out in Durban around 1860. Now the taxonomic hierarchy. Kingdom Plantae, division Embryophyta Angiosperm, class Dicotyledon, order Sapindales, family Anacardiaceae, genus Mangifera, and species is Indica. Now the history. The history of mango, its prominence in Hindu mythology and religious observance leaves no doubt about its antiquity. The cultivation of mango in India is as old as 4,000 years, reported by De Candolle 1883, on the basis of writings by subsequent botanists to 6,000 years, Hill 1952. In Ramayana by Valmiki, mango fruit and trees are described at many places. Economic importance of mango in ancient time is suggested by one of the Sanskrit names, Am, as an alternative meanings of provisional of victuals. There are frequent discoveries of mango in archaeology, the most outstanding being the one in sculptures on the stupa of Bharat dating back to 110 BC. In the travel notes of the Buddhist pilgrims, Fain and Sungyun, a mango orchard is mentioned as have been presented by Amaradhika to Lord Buddha to enable him to use it as a place of repose. The next slide is references. Mango Production, Protection एंड पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी 600 पेजेस की एक बुक है। न्यू विशाल नरेंद्र पब्लिशिंग हाउस ने इसे छापा है। मेरी किताब है, मेरे द्वारा लिखी हुई किताब है। 6 to 22 पेजेस का हमने इसमें रेफरेंस लिया है। कंडोल एडीही ओरिजिन डेस प्लांटिस कल्टिवर्स जर्मर, बेलियर एंड की पेरिस 1883 का रेफरेंस लिया है। कंडोल जी का लिया है हमने ओरिजिन ऑफ कल्टिवेटेड प्लांट्स। हिल एएफ इकोनॉमिक्स बॉटनी का लिया है। कोस्टरमैन एंड बॉम्पर्ड सर का भी हमने लिया है एंड लीनियस स्पीसीज प्लांटेरियम के भी हमने रेफरेंस लिया। धन्यवाद।